ग्रीटिंग्स एवरीवन। सो अभी तक के वीडियोस में अगर आपने मेरे लास्ट 2 वीडियोस देखे होंगे तो उसमें वो ज्यादातर प्लेसमेंट्स रिलेटेड थे एंड मैंने सोचा कि अभी थर्ड वीडियो में हम लोग थोड़ा मास्टर्स रिलेटेड कुछ करते हैं। एंड इसीलिए वी हैव जैनिल विद अस टुडे। ही इज फ्रॉम विजेटीआई सिविल एंड वो उसको अच्छे खासे काफी अच्छे ज्यादा मास्टर्स एडमिट्स मिल चुके हैं एंड हिज प्रोफाइल इज ग्रेट एंड ही विल बी टेलिंग यू मोर अबाउट इट। सो आई विल पास इट ऑन टू यू जैनिल। थोड़ा अपने बारे में बताना एंड the admits that you have Okay. received. And Yeah. So hello everyone. This is Jainil Visariya, currently studying in the final year VJTI Civil Engineering, and I'm planning to pursue my master's degree in fall 21. So for for my MS, I've got admits from Purdue, Virginia Tech, Texas A&M, and North Carolina State. okay. So those are some of the great admits, and many of those colleges are in the top 100 of USA. Yeah. So those are great. And can you tell us more about your profile? Like how was your GPA, GRE score, and everything? Just a minute. My GPA that was around 8.61, and my GRE score was 317. TOEFL was 1.3, and I had a 2-month internship. Also, I tried publishing one research paper, but it couldn't publish by the applications were done. So, Okay. but still, I could mention about it in my SOP. So, I guess it created some of the impact. Okay. 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 So like this decision of yours to go for masters, like did you take this decision right after you joined bachelor's or like in between, or what was the motivation behind that? Yeah, so no, like I did not have anything pre-planned in my mind. Like frankly speaking, I wasn't even sure of taking civil engineering after my 12th. So Okay. I had a choice between, like, my according to my interests, I was aligned towards civil engineering or mechanical engineering. And uh, so after I got into civil engineering in around second or third year, I started analyzing all the career prospects that I have, and according to my condition, I thought masters was the most appropriate one. Okay. So like your master's is in like pure structural engineering or construction Core. management. Yeah, it's core field in structural Okay. engineering. Yeah. Okay. Okay. So like every college that you have applied to, so they have the same specialization, or I mean, do they have like masters in structural or masters in civil with a No. specialization in structural? Yeah. So the degree they offer is masters in civil engineering with specialization structural. Okay. Okay. Got your Yeah. point. So this is like a 2-year program Yeah. at Two every years. university. Yeah, Okay. like many universities also offer 1.5-year program, but because I have taken MS thesis, so that Mm-hmm. that degree is quite difficult to complete in 1.5 years. So generally, Okay. MS thesis is completed in 2 Yeah. years only. Okay, okay. So like, acha, so you have an option of professional degree as well. So like Yeah, only the masters in civil engineering instead yeah, of that MS. is non-thesis or Okay. M engineering. Yeah, yeah. So that will be a project-based degree, right? Yeah, Or correct. Yeah, okay, project okay, based. okay. So like you said a few moments before that you have interned at some company for 2 months, like during your summer internship. So was that internship in like aligned with your master's program, or how was it? Yeah, so I interned at Rajesh Structural Consultants, and Okay. before applying there, I had a good point of view that I want to pursue my career in structural engineering only. So whether Okay. it be masters or any job placement, I want to go in the core field only. So I tried finding the internships in that domain only. So, and yeah, that internship quite impacted me in the field because uh, I did not know many concepts in that field, and the internship actually taught us many things which is not included in the curriculum. Yeah. Yeah. And I think that is very important
or any job placement teaches you in your coursework. Got your point. Got your point. I mean, this is not just limited to civil engineering, but every degree out there. Like Yeah, we exactly. don't get enough experience, like hands-on experience, until and unless we get into some job or internship. So I get your Correct, point. correct. Like majority or not majority, but some major part of your SOP was related to this internship, and that created an Yeah, impact. yeah. Okay. So like structural engineering लेने के पीछे मतलब like this specialization specifically, I'm not sure about the other specialization, but there must be many other. So Hmm. ऐसा reason, like you said, internship से you thought कि structural मुझे लेना चाहिए, like that was the trigger factor, I would say, the Yeah, internship. one of the trigger factors. Yes. Yeah. And तो फिर मतलब ऐसे स्ट्रक्चरल को छोड़ के जो बाकी के डोमेन्स है, एज कम्पेयर टू दैट स्ट्रक्चरल थोड़ा ज्यादा पेइंग होता है या कैसे होता है, और इज दैट योर इंटरेस्ट इसीलिए लेना था? Paying almost structural and construction management are at almost same levels, but yes, structural is considered a more mathematical and core field. In construction management, that is related to somewhat management. So थोड़ा नॉन कोर आ जाता है उसमें, तो मेरे Okay. को नॉन कोर नहीं चाहिए था, इसलिए आई वांटेड टू परस्यू स्ट्रक्चरल ओनली. Okay, okay. So like you said, your GRE score was 317 and you had a perfect like 170 on 170 quant score. So that's a pretty great score. So can you tell us more about your GRE preparation? Like how did you prepare? Like did you join any classes or you prepare by your own? So to all the viewers that are watching this video, I would strongly recommend not to join any classes for GRE because they would be only a waste of money. I have my friends who have put in around 15 to 16,000 only for GRE classes, and they could not even use the 1 rupee of it. So Yeah. most of the preparation for GRE will be on your own only, even if you join classes or not. And yes, coming from an engineering background, we have an upper hand in quants. So I guess that helped me to score a perfect 170. And to the Indian students, verbal will go quite difficult, especially for people like me who come from SSC background. So ICSE people have a better hold on English, so they get maybe 5 to 7 marks more than us. And yes, we need to put more efforts in verbal and essay. So Yeah. So like out only of that. all the students that I have spoken to, like Yeah, those who got their GRE scores, like Indian students usually have an upper hand. Overall, yeah, Indian students yeah, at the exactly. quants, and we fall back, like fall short of verbal sometimes. A Yeah, good score got in it. verbal. Yeah. So and उसके साथ साथ you said like you had a TOEFL score of 103, which is like once again 100 above out of 120. So that's good as well. So like उसके लिए भी same thing, right? So you prepared by your own. Yeah, by own only. Actually, GRE के बाद TOEFL लेते तो you don't need much of the practice for हाँ. TOEFL specifically, because most of the topics like reading passage, then even the essay section, they all are similar to GRE and in fact easier in TOEFL. So Okay. just maybe 15 to 20 days of preparation is enough for TOEFL. And same goes with IELTS also, because the level is almost same of IELTS and TOEFL. Only a bit of pattern is different, and the scoring is also different. Okay. Okay. So like there are many resources out there for GRE preparation and all. Yeah. So like did you follow any specific resource? I strongly recommend only follow the authentic resources. The for GRE and TOEFL, you will have the ETS material. I Yeah. have no idea of the IELTS, but Hmm. for GRE and TOEFL, only follow ETS material. For GRE quants, you can follow maybe third party Hmm. resources that are available like Manhattan, Princeton, Yeah. and I don't remember other names. But for verbal and TOEFL, we need to follow ETS only, because other third party resources, they do not have that kind of English that the ETS provides. Yeah, sometimes they are of quite upper level in their Yeah, yeah. and there are मतलब बहुत ही ज्यादा वेग आंसर की भी उनका वेग रहता है, हाँ क्वेश्चन हाँ. ऑप्शंस भी 2 या 3 सेम मीनिंग वाले रहते हैं, तो इट्स ऑफ नो यूज.
हाँ कभी कभी लाइक अपने को ही मतलब ऐसे लगता है कि नहीं हमें नहीं आ रहा क्या ऐसे, एंड लाइक हाँ वही वही। और हाँ मतलब बाद में जब बाकी लोगों से पूछते हैं तो इवन दे टेल दैट द क्वेश्चन मेक्स नो सेंस, या then why waste our time in practicing them? करेक्ट करेक्ट And या yeah, one more thing I forgot to add, in GRE preparation, don't miss out the AWA preparation, because हाँ most of us just focus on quants and verbal, and in the last 5 or 6 days we remember that AWA भी है, लेकिन AWA के लिए अच्छा खासा प्रैक्टिस लगता है। एंड मैंने ऑलमोस्ट 10 ऐसे लिखे थे आर्ग्यूमेंट और दोनों के। तो बस उसको ऐसे साइडलाइन मत करना, क्योंकि बाद में एंड मोमेंट पे बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि मॉक्स भी देने हैं और ऐसे का प्रैक्टिस भी करना है। तो स्टार्ट करो एटलीस्ट मे बी करेक्ट 15 to 20 days पहले से AWA भी स्टार्ट कर दो। ओके ओके, सो दैट्स अ ग्रेट सजेशन। एंड तो मतलब ओवरऑल अभी जैसे आफ्टर सिविल यू हैव टू ऑप्शंस, इधर यू कैन गो फॉर जॉब्स या फिर यू कैन गो फॉर दिस मास्टर्स ऑप्शन। तो लाइक ऐसा कुछ रीजन है क्या कि नहीं, या फिर स्पेसिफिकली इस फील्ड में सिविल में लाइक अपॉर्चुनिटीज थोड़े सैचुरेटेड है एंड थोड़े कम है, एंड दैट वाज द रीजन फॉर गोइंग फॉर मास्टर्स, या फिर पहले ही अपस्किल करके फिर जॉब इंडस्ट्री में लगना था, कैसे मतलब व्हाट नहीं वाज योर मतलब प्लान? मैंने एक्चुअली इंडिया का हायर एजुकेशन भी देखा था, जैसे ओके एमटेक होता है, लेकिन इंडिया में कोर फील्ड को उतना ज्यादा पैकेज मिलता नहीं है। एवरेज हाँ पैकेज इज अराउंड 5 to 6 लाख आफ्टर बीटेक, एंड मे बी हम्म एमटेक करके बाद में जॉब पे लगे फिर भी हार्डली 8 to 9 लाख होगा, विच ओके फॉर एन कोर फील्ड इज क्वाइट लो कंपेयर टू द अदर फील्ड्स। लाइक कॉम्स आईटी वगैरह को तो बहुत ज्यादा ही मिलता है, तो या उनका तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली एमटेक इंडिया में इज मच ऑफ लाइक थोड़ा स्कैटर्ड है अभी भी, हम्म और एमएस में थोड़ा ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड और रिसर्च बेस्ड है। तो मेरे प्रोफाइल और मेरे इंटरेस्ट से वो ज्यादा मैच कर रहा था, इसलिए मैंने एमएस चुना ओवर एमटेक। ओके ओके गॉट योर पॉइंट। तो एंड फिर जॉब का हाँ एक्चुअली मतलब मैं पहले आई वाज थिंकिंग के 4th ईयर के बाद जॉब कर लूं, एंड देन आफ्टर मे बी 2 or 3 years आई विल थिंक ऑफ एमएस। लेकिन ओके ड्यू टू द कोविड इम्पैक्ट कोर कोर फील्ड में जॉब्स इतने सैचुरेट हो चुके थे कि हमारे सीनियर्स में से हार्डली 7 to 8 people got placed ओके from the college. So I had to take decision then, because then the applications would also start. So I thought, why wait for jobs opening up and then thinking of, I thought of starting my applications then only. ओके ओके गॉट योर पॉइंट। तो फिर मतलब हाँ, क्योंकि बहुत बार कैसे होता है कि लाइक सी एस आई टी एक्सटीसी ये ब्रांचेस के लोग लाइक मोस्ट ऑफ देम डायरेक्टली गो फॉर मास्टर्स आफ्टर देयर बैचलर्स, बट कुछ कुछ लोग जॉब करके भी जाता है। बट हाँ ये लाइक स्पेसिफिकली फॉर सिविल इंजीनियरिंग थोड़े हार्डशिप्स बढ़ जाते हैं बिकॉज हाँ थोड़ा जॉब मार्केट सैचुरेटेड है। या बराबर। yeah got your point। फिर अभी जैसे like you have got into some of the top universities, so Yes. it's pretty sure like you had a great GPA, you had a great GRE score, but apart from this I'm sure like you must be having some good LORs, good SOPs। Yeah. तो like LOR पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते because faculty is giving that to us and they'll be uploading from their side। बट Yes. एसओपी जो अपने हाथ में रहता है तो उसमें लाइक व्हाट ऑल पॉइंट्स शुड वन मेंशन एंड वन शुड नॉट मेंशन, मतलब क्योंकि वर्ड लिमिट होता है एंड वो वर्ड लिमिट में लाइक यू हैव टू फिट थिंग्स राइट। सो Correct. कौन से पॉइंट स्किप करके भी चल सकते हैं और कौन से पॉइंट मतलब डेफिनेटली मेंशन करने चाहिए? So most of the university का word limit is around 1,000 words, ओके and लाइक अभी रेज्यूमे भी सबमिट करना रहता है और एसओपी भी सबमिट करना रहता है, तो इसमें से बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन कॉमन हो जाता है। लेकिन हाँ रेज्यूमे कैसा हो जाता है कि पॉइंट में देना है और ज्यादा प्रिसाइज रखना है, लेकिन एसओपी में यू नीड अ फ्लो। like SOP is like you are telling a story about yourself. What was the past? What was your past? What is your current? And what would be your future plans? So ओके वो अच्छे से अगर स्टोरी में बिठाया then only it would look attract। and resume में थोड़ा जितना पॉइंट्स और जितना प्रिसाइज रखा उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि ये क्या बोला था मैं,
हाँ, because we are not work professionals, then हाँ it is recommended कि एक 1 पेज रेज्यूमे ही हो. तो अगर ओके हम पूरा डिटेल में डालने जाए रेज्यूमे में और 1 पेज में फिट करने जाए तो फिर वो फॉन्ट बहुत ही छोटा करना पड़ेगा और वो अच्छे से दिखेगा नहीं. तो इट इज बेटर वी कीप इट प्रिसाइज. एंड एसओपी में इट मोर फोकस शुड बी ऑन योर what were the reasons you are pursuing masters हाँ and what would be your future goals. ओके And like abhi SOP में you won't mention what was the CGPA you got, what was the what all like yeah, also if many universities also have 500 word limit for the SOP. So in that you can actually skip the extracurricular activities, because in US universities uh, they don't more consider extracurricular activities more. And ओके US universities, I guess, they consider more as CGPA and then your research background if you are applying to MS thesis, and then the work experience. ओके So, ओके like 8.61, I thought was a good CGPA, but people were there with more CGPA than me, and they या actually got into better universities. So, मतलब जो भी अभी एक्चुअली प्रिपेयर करने जा रहा है एमएस के लिए, फोकस मोर ऑन सीजीपीए देन फोकसिंग मोर ऑन द अदर स्टफ्स. बिकॉज एक बार अगर एटलीस्ट 6 सेम तक का भी सीजीपीए 9 से भी ऊपर रखा, then it would create a much more impact on your profile. या गॉट योर पॉइंट क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लाइक जीपीए सेंट्रिक भी हो जाती है एंड और जी ये साल क्या हुआ था कि जीआरई वेव कर दिया था बहुत करेक्ट सारी हाँ यूनिवर्सिटीज ने. तो जीआरई के बदले द मेजर कंसिडरेशन पॉइंट फॉर देम वाज सीजीपीए. ओके या सो मतलब जीआरई अपलोड कर सकते थे बट उसका वेटेज उतना नहीं था जितना जीपीए का था. नहीं, एक्चुअली यस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने उसको कंसिडर भी नहीं किया था जीआरई स्कोर. ओके 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 अच्छा सो आई गेस ये फॉल 22 एंड 21 में ये बहुत ज्यादा हुआ था लाइक जीआरई हाँ, वेविंग ऑफ का. अभी थोड़ा लाइक 23 में 23 मे से भी निकल भी जाएगा. हाँ मे बी ऐसे भी हो सकता है कि जीआरई की वैल्यू कम होती भी जाएगी या फिर दे हाँ ब्रिंग एक्चुअली. बैक द जीआरई. कुछ भी हो सकता है. सो लाइक वो टाइम पे वैसे देखना पड़ेगा. So it's better to give the GRE and be safe for all the fall हाँ 23 or future candidates. सो लाइक अभी तक तो यू सजेस्टेड एवरीथिंग दैट इज आउट देयर बट स्पेसिफिक लाइक यू टोल्ड कि जूनियर्स को सीजीपीए पे कंसंट्रेट करना चाहिए देन एसओपी कैसा होना चाहिए लाइक व्हाट यूनिवर्सिटीज यू कैन अप्लाई टू बट लाइक इसके अलावा भी एनी सजेशंस दैट यू हैव दैट यू कैन गिव टू योर जूनियर्स. For LORs, you can try for all the 3 LORs being coming from academic background, then 2 academic and 1 professional. But Okay. yes, if you are working professional, then working LOR makes sense. But 2 months of internship ka LOR does not create that impact that the academic LOR would make an impact. And academic LOR bhi try karo ki at least the professor knows you for around 1 to 1.5 years and not for only just one subject he taught and you are asking for his LOR. So Okay. जितना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए वो आपको पहचानते हैं उतना ही ज्यादा वेटेज इट विल कैरी. And obviously the post of the professor will also matter. And what else? हाँ, SOP मतलब अगर I would suggest to draft your SOP on your own, but तो एंड हाँ SOP ड्राफ्टिंग पे भी अच्छा खासा टाइम दो. ऐसा नहीं कि कल डेडलाइन है और लास्ट एक वीक से मैंने ड्राफ्ट करना चालू किया, तो वो उतना ज्यादा अच्छा ड्राफ्ट बनेगा नहीं. ट्राई अराउंड गिविंग 2 months ओनली फॉर SOP. एंड व्हाट एल्स? हाँ, don't miss out the funding deadlines because they matter a lot. Because talking about me, I got a fellowship from Texas A&M,
and Okay. many friends of mine who had same profile, but they applied a bit late, like after the funding deadline. They could not get that fellowship. So Okay. yes, and even for the assistantships to uh, matlab, even if you want to try for that assistantship, you need to like in some universities you need to have completed your application before the funding deadline only. Okay. Okay. Got it. Yeah, So फिर early deadline में करोगे तो like you have better chances at getting the fellowships and scholarship. yeah, exactly. And Okay. for the university shortlisting, consider all the options. Focus more on ROI. Like for the core branches, ROI may be maybe ranked much higher than the rank of the universities, because Okay. we don't get that much pay even there. Like the average pay is around 70 to $80,000, and Okay. if you are uh, selecting a university whose tuition fees is only $50,000 per year, Hmm. so that won't make sense that you are spending too much of money only for the education, and you won't be able to revive it after 3 years of job. Yeah. Yeah. So that's a great So point. हाँ, तो and मतलब like हाँ हाँ yeah go on. और कुछ फिलहाल तो याद नहीं आ रहा. हाँ हाँ definitely like if there's anything I'll add मतलब अगर बाद में you remember हाँ anything I'll add it in the description of this video so others can get it. हाँ ठीक है. तो फिर मैं just एक बार reiterate कर देता हूँ viewers. हाँ तो फिर you had a GPA of 8.61, 8.61 or 8.62, GRE score of 317, 170 quants, 147 verbal, and correct. you had how much in AWA? 3.5. Okay, so 3.5 in AWA, you had a TOEFL of 103, and you Yes. got admits for MS in Civil Engineering from TAMU, Virginia Tech, and what were the other university? And Carolina State. Okay, okay. So great. And we are at the end of the session, and I would just like to say like all the best to you. And ये भी Thank you. जानना था कि like before going for masters, like have you planned anything कि बीच में कुछ research करना है या फिर अभी थोड़ा आराम करके सीधा states में travel करना है? नहीं मतलब आराम भी नहीं करना, रिसर्च जितना भी टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ. आई विल ट्राई टू अप्लाई फॉर द असिस्टेंटशिप्स बिफोर आई रीच देयर. देन ऑब्वियसली बाकी सब अरेंजमेंट्स भी रहेंगे उधर के, रूम का अरेंजमेंट, देन अबाउट द फंडिंग एंड वहाँ द पैकिंग स्टफ एंड ऑल. सो आई डोंट थिंक रिसर्च वुड एनीवन वुड able to do research before in this period of time. True. अभी मतलब एकेडमिक रिसर्च थोड़ा कम एंड वो वाला रिसर्च ज्यादा करना पड़ेगा वहां पर कहाँ रहना है. वही. Okay. So like once again all the best to you, and जो भी viewers like whoever is planning for masters, you must have got some insights from this session, and I see like you can follow these insights and get into some of the top universities. So chalo then thanks a lot Jainil. Thanks to you too, and I actually like the concept that you have started, and with the 2 videos I have watched of yours, they were really good content, and the way of presenting was also quite good. So yeah, thank you for having me. Sure. No problem. Thanks a lot. Okay.